Okay, good evening all of you once again. I think in the last lecture we were in chapter number 6, that is functional level strategies, एंड हमने ना लास्ट स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना शुरू किया था, वो था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. एंड आई थिंक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर हमने अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया था. देन वी इवन डिस्कस व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट, दैट मींस 4 P's. देन फिर एक्सपैंडेड 4 P's के अंदर 3 P's को और ऐड कर दिया है. ये हमने सब डिस्कस कर लिया था. थोड़ा सा और बेसिक डिस्कशन करेंगे दैट यू नो नॉर्मली व्हाट ऑल फैक्टर्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. And then at the same time, we need to also see if you want to design a marketing strategy, उसका ओवरऑल जो प्लानिंग रहेगा उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे, वो जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. सो डू वन थिंग इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर 115. See guys, marketing strategy is the only strategy जिसको सबसे ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज बिलीव दैट एमसीक्यू के अंदर 1 या 2 मार्क क्वेश्चन कैन बी देयर फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी, बिकॉज सी 4 या 5 मार्क क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा किसी और स्ट्रेटेजी से भी, बट जो 1 या 2 मार्क के लिए एमसीक्यू रहेगा वो ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आराम से पूछा जा सकता है. Talking about marketing strategy, now you all know this really well that in today's world, marketing plays a very, very important role. Obviously, marketing had an important role even 15 years back, but today if you see the way businesses are flourishing across the industry, और अक्रॉस द इंडस्ट्रीज रादर, आपका मार्केटिंग का जो रोल है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू 15-20 years back. And now the bigger challenge is the way you market has also changed significantly. So basically earlier it was simple, maybe through a radio or a television or through a newspaper, that was more than sufficient to reach out to masses. Now if you ask me, more than that, social media is an important place to reach out to masses. Maybe choosing right set of you can say a cricketer or a footballer or maybe any sports personality or a Bollywood actor, because people believe they can be better influencers in comparison to your normal radio and TV awareness programs. So yes, marketing has also undergone significant change. Unfortunately आपके सिलेबस में कुछ नहीं बताया कि पहले क्या था अब क्या था. इन्होंने सिर्फ आपके सिलेबस में बताया नॉर्मली मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त क्या क्या चीजों को दिमाग में रखोगे. बहुत ही बेसिक सा जनरल कंटेंट दिया है. इन real life, I think, according to me, marketing is something it cannot be taught. This is something you need to experience over a period of years and understand how things have undergone significant amount of change. So I'm sure about this, that once you qualify, once you start working, whether into a corporate world or into a mid-size firms ka world, or maybe you start your own practice, your understanding of marketing aspects will start going to a different level. This is something what you experience over a period of years. It cannot be taught, according to me, by a few chapters or by few lectures, but still theoretically थोड़ा understanding देना बहुत जरूरी है. We'll start with that for now. Talking about marketing variables, मतलब ऐसे कुछ वेरिएबल्स जो आपको दिमाग में रखने चाहिए जिनके बिना आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता. तो बेसिकली ऐसे क्या फैक्टर्स या वेरिएबल्स आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए अगर आप चाहते हो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुली काम करे. तो देखो इसमें कुछ ना बेसिक चीजें हैं. सबसे पहले द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू बी यूज्ड. ओके, बहुत लॉजिकल चीज है क्योंकि पहले के जमाने में ना डीलरशिप्स हो गए, एजेंसीज हो गए, उनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था. तो बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए दैट क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हमारे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने वाला है. बिकॉज नाउअडेज वी नो रियली वेल दैट लॉट ऑफ स्मार्टफोन्स आर सोल्ड डायरेक्टली थ्रू फ्लिपकार्ट और Amazon. Basically, on Amazon or Flipkart, a company can have their own virtual stores. So do you get my point? Marketing also becomes different and easy in comparison to your conventional marketing campaigns. तो yes sir, distribution channel का network क्या है, कैसे हमारे customer तक final product पहुंचता है, ये एक essential part है. because marketing strategy में वो चीजें आपको पक्का से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर शुड नो हाउ टू गेट दिस प्रोडक्ट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, कितना पैसा और कितना एक्सटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग. ट्रस्ट मी, there is no limit in terms of deciding a budget for marketing. I would say it depends upon organization to organization. Their organization का capability क्या है, उनके competitors का normally approach क्या रहता है towards the amount of advertising. तो the amount of advertising is a very very subjective thing. It will depend upon company to company, industry to industry. If these are extremely highly funded entities, like for example if you ask me Byju's and all, who have really strong
strong people at the back जो बहुत अच्छा फंड उनको दे चुके हैं, they are financially very very strong today in terms of cash flows, तो शायद they'll go big bazooka and probably invest a lot of money on advertising because they believe creating a brand awareness, creating a penetration in the market is more important, like so that is also possible. So amount and extent is also a very important part. Accordingly आप advertising का strategy बना सकते हो. Next, सबसे interesting चीज है whether to limit or enhance the share of business. मतलब आप क्या चाहते हो कि जो हमारा टारगेट मार्केट है बहुत लिमिटेड रहना चाहिए या टारगेट मार्केट को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, आप मासेस के लिए प्रोडक्ट को लेके आना चाहते हो या जो एग्जिस्टिंग टारगेट मार्केट है उसको ही केटर करना चाहते हो, उस पे भी आपका मार्केटिंग कैंपेन डिपेंड करेगा. वेदर यू वांट टू बी अ प्राइस लीडर और अ प्राइस फॉलोअर. प्राइस लीडर मींस मे बी यू विल डिटरमाइन द लोएस्ट प्राइस और द हाईएस्ट प्राइस इन द मार्केट, और मे बी यू विल डिसाइड योर डिटरमाइनिंग योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिपेंडिंग अपॉन अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. वेदर यू विल ऑफर अ कंप्लीट और अ लिटिल वारंटी व्हिच इज वेरी नॉर्मल. एंड सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने सेल्स वाले लोगों को किस तरीके से रिवॉर्ड करते हो. एंड आज की तारीख में ना लॉट ऑफ पीपल यूज सेमी वेरिएबल कंपोनेंट वेयर देयर इज अ वेरी माइनर फिक्स कंपोनेंट, एंड जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो कितना सेल करते हैं उस पर डिपेंडेंट रहता है. दैट एक्चुअली हेल्प्स यू एट अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कैंपेन्स एंड ओवरऑल एक कंपनी का सिग्निफिकेंट ग्रोथ आज की तारीख में उनके सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन पे भी सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट होता है. तो यस, ऑल्दो ये थियोरेटिकल इन नेचर है, बट हाँ इनमें बहुत सारी चीजें रेलेवेंट है आज भी. अगर आप एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो आपको इन सब चीजों को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए. बट इन टुडेज वर्ल्ड आई टेल यू व्हाट, it's so subjective, it's so difficult to predict कि क्या strategy आपके लिए सही में successful हो सकती है. Maybe making a product viral through memes or maybe through some of the other ways. By that way at least people get to recognize who what the product is, what the company is. That can also be another way. So people use different means nowadays. So some are definitely questionable in nature, some maybe are conventional methods. Once again, like आज भी ऐसा नहीं है newspapers के अंदर advertisements नहीं आते हैं. Amazon भी newspapers के अंदर advertising करता है. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो दैट कन्वेंशनल मेथड्स खत्म हो चुके हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड हर पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए कोई ना कोई अलग अलग तरीका डेफिनेटली रहेगा. तो ये कुछ जनरल यू कैन से फीचर्स ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर डिटरमाइन करोगे कि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाएगा. क्विकली स्पेंड 2 minutes, रीड दीज पॉइंट्स वंस अगेन. दिस कैन बी अ सेपरेट 4 mark क्वेश्चन. अगर उनको आपको थोड़ा परेशान करना हुआ, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हुआ जो आप आसानी से आंसर ना दे पाओ, दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस. क्विकली स्पेंड 2 minutes गाइस. पढ़ा आपने? पढ़ा क्या गाइस? नेक्स्ट पेज पे आओ. कैन यू सी डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बोला दैट सिर्फ मार्केटिंग करने से ही कुछ नहीं होगा. So, while designing or developing your marketing strategy or your plan of action regarding marketing, you have to coordinate, all your other departments as well. For example, what I need to market. So, आप marketing करते वक्त किस पे emphasis करना चाहते हो? आप क्वालिटी पे एम्फोसाइज करना चाहते हो, प्राइसिंग पे एम्फोसाइज करना चाहते हो, या फिर मे बी कंपनी का जो ब्रांड रेपुटेशन है उस पे. फॉर एग्जांपल जब गूगल पे का ऐड आता है तो वो लास्ट में हमेशा क्या बोलता है, गूगल की सिक्योरिटी के साथ में, लाइक दे जस्ट acknowledging that Google is a bigger brand name that can be respected or maybe acknowledged by people. So what are you really emphasizing on? ये बहुत essential part है. देखो जरा क्या बोलता है, marketing alone cannot produce superior value for consumers. It needs to work in coordination with other departments to accomplish this. Obviously, और अगर एक फर्म चाहता है competitive advantage अचीव करना, आपको याद है क्या? अब मैंने आपको बताया था कोर कॉम्पिटेंसी एज पर सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, दैट कोर कॉम्पिटेंसी नॉर्मली एक आध एक्टिविटी नहीं होती है, इट्स अ कोऑर्डिनेटेड
अफेयर ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज जो आपके लिए एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करता है, आपको सुपीरियर एडवांटेज क्रिएट करके देता है। तो अगर आप एक सही मायने में मार्केटिंग के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाहते हो, देन मार्केटिंग हैज टू वर्क इन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पीपल हैव टू वर्क इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द R&D डिपार्टमेंट पीपल, विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पीपल। दे ऑल नो रियली वेल कि एग्जैक्टली क्या चीज सेल करना है, क्या आसानी से सेल हो पाएगा, ये उनको पता होना चाहिए। देखो, फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्म नीड्स टू लुक बियॉन्ड इट्स चेन ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज इट्स चेन इनटू सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अल्टीमेट कंज्यूमर्स। उन सबको कंसिडर करना चाहिए और सबको एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए, तभी जाके आप एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाओगे। एंड मार्केटिंग डेफिनेटली कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, सिर्फ मार्केटिंग से कुछ नहीं होगा। मार्केटिंग अलोन मे नॉट बी एबल टू गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डायरेक्टली, बट मार्केटिंग अलोंग विद अदर एस्पेक्ट्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट, कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। अब देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज है। एक कंपनी ना पूरे सेगमेंट्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंडस्ट्री के जो टारगेट मार्केट के लोग हैं, सबको एक साथ में केटर नहीं कर पाएगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सबको केटर कर जाएगा आसानी से। फॉर एग्जांपल, टॉक अबाउट स्मार्टफोन्स। सो आई एम श्योर देयर आर स्मार्टफोन जिसका एक मार्केट है फ्रॉम 1000 रुपीज टू 10,000 रुपीज, देन देयर इज अ मार्केट बिटवीन 10 to 20,000 रुपीज, 20 to 50, 50 बियॉन्ड। तो हर किसी रेंज के लिए अलग अलग टारगेट मार्केट रहेगा। तो आपको ना बेसिकली पहले पूरे मार्केट को समझना चाहिए, उस मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहिए, फिर हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको अलग तरीके से मार्केट करना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट हैव वन सिंगल मार्केटिंग कैंपेन फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, दैट इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो कैन यू सी, सिंस द कंपनीज कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंज्यूमर्स in the given market, it should divide the total market into multiple segments, that is called as market segmentation। ये वर्ड्स को मार्क करना, ये वर्ड्स के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एमसीक्यू आ सकता है। तो सर पहले वो बोलता है टोटल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करो, फिर सर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सेगमेंट्स क्या है उसको चूज करो। हो सकता है बड़ा कंपनी सारे सेगमेंट्स को चूज करना चाहता है, बट सबके लिए वो अलग अलग प्रोडक्ट को बनाएगा। एंड देन हर एक अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाओ, बिकॉज मे बी 0 to 10,000 वाले को फीचर्स बेचने हैं along with the least possible price, 50,000 वाले बियॉन्ड को सिर्फ फीचर्स बेचने हैं, प्राइस बिल्कुल नहीं बेचना है। तो आपको क्या बेचना है वो भी डिपेंड करेगा योर सेगमेंट टू सेगमेंट वाइज। दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव अ सेपरेट पीस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर ऑल दीज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेगमेंट्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो हाउ डू यू रियली कनेक्ट विद द कस्टमर? पहले टोटल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करो, आपके लिए सही सेगमेंट क्या है उनको आइडेंटिफाई करो, फिर हर सेगमेंट के लिए अलग तरीके से स्ट्रेटजी को डेवलप करो, तो ही आप सक्सेसफुली आगे बढ़ पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड my point. If you talk about Tata Motors, in Tata Motors they have commercial vehicles, they have normal customer vehicles, then they have a luxury segment vehicles, then they have a Jaguar Land Rover also, JLR भी अलग से exist करता है। तो आपके पास में जो मार्केटिंग कैंपेन भी रहेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजाइजिंग जो रहेगा, वो हर किसी के लिए अलग तरीके से किया जाएगा। It is not going to be same for all the segments. I hope you understand this. So do one thing, quickly spend 1 minute, read delivering value to the customer and how do you connect with the customer। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। पढ़ो जरा एक बार। लेट्स गो नेक्स्ट। आगे आपको मार्केटिंग मिक्स मिलेगा जो हमने डिस्कस कर लिया है। मार्केटिंग मिक्स कैन बी अ सेपरेट 4 मार्क क्वेश्चन गाइस। यू शुड नो ऑल 4 P's एंड एक्सपेंडेड प्रोडक्ट मिक्स, मतलब एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स की इन 4 P's के अंदर फिजिकल एविडेंस ऐड हो गया है, प्रोसेस ऐड हो गया, पीपल ऐड हो गया है, वो जो एडिशनल 3 P's है वो भी आपको आने चाहिए। दिस कैन बी अ सेपरेट 4 or 5 मार्क क्वेश्चन। देन कम टू द लास्ट पार्ट, मार्केटिंग एनालिसिस। दैट इज हाउ डू यू फॉर्मुलेट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ट्रस्ट मी, इसको डिटेल में उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, बट आई वुड से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम टू पेज नंबर 120, मार्केटिंग प्लानिंग, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑल्दो इट इज नॉट
वेरी क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है मार्केटिंग प्लानिंग के ऊपर। हम यहां पर आते हैं, उसके पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मार्केटिंग एनालिसिस। देखो ये बोलता है एक अच्छा मार्केटिंग प्लान ऑफ एक्शन बनाने से पहले, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करने से पहले आपको एक जनरल एनालिसिस करना चाहिए। क्या एनालिसिस रहेगा? जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका एनालिसिस। दैट मींस आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपके कॉम्पिटिटर्स आज की तारीख में क्या करते हैं, मार्केट में क्या आसानी से इजीली सेल होता है, क्या डिफिकल्ट तरीके से सेल होता है। तो बेसिकली एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसको आपको समझना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आई वुड से also study the global market, like globally other organizations what they have done to successfully run their businesses. According to me, that is going to really help you. So this marketing analysis is not an easy job. Every year a lot of companies spend billions and billions of dollars just to understand what marketing can be the best possible way to make my customers understand this. Like I'll give you a simple example. When you talk about Elon Musk today, so when you talk about Tesla, everyone relate Tesla with Elon Musk. So I would say majority of the marketing part for a Tesla happens through one person, that is the founder itself. Do you get my point? The same way for Patanjali, it is the Baba. So sometimes maybe you find those mechanisms by which without even spending billions of dollars, maybe your founder, his reputation in the market. So maybe I believe sometimes that Elon Musk has created this kind of reputation in the market intentionally so that he doesn't have to spend billions and billions of dollars only on the marketing, because I believe they spend so much less money in comparison to other players, but still they get such kind of media coverage which a lot of other people don't get, because this founder is more glamorous in nature. So sometimes people find this kind of strategy now, which is very very common nowadays, like like for example Mukesh Ambani working on his you can say social media presence in different terms, not directly but indirectly through other entities. So this is somewhere I think is becoming a new way by which the founder needs to come in limelight. The founder needs to sell his or her values. I think Jack Ma has done this brilliantly. Elon Musk has done this brilliantly. I'm not saying they're the best in terms of marketing, but they have indirectly created a scenario where, according to me, because of them, their brand value has gone to a different level. This is just my personal belief that I think nowadays that founders presence in social media plays a very very important role when it comes to the overall valuations. Otherwise I still doubt the kind of valuation Tesla attracts today. Does it really actually will be able to do justice in the coming future? That's again a question mark. We don't know about this, but that's how things work differently in today's world. So the same way marketing analysis में आपको बोलेगा आपको एक जनरल कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को, आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है उनको देखना चाहिए जो कंपनी परस्यू करना चाहता है, एंड ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, क्या ऐसे फोर्सेज हैं जिनको यूज करके वो कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकता है, या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जो उसको अवॉइड करने चाहिए। तो एक जनरल मार्केटिंग एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट अगर आप मुझे पूछोगे मार्केटिंग प्लानिंग, जो एक्चुअली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर ना उन्होंने बहुत ही हैपजार्ड तरीके से स्टेप्स को लिखा है। मतलब मेरे हिसाब से दिस मार्केटिंग प्लानिंग इज द ओवरऑल प्रोसेस जिससे आप पूरा प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करते हो। तो हाँ, मैं डेफिनेटली मानता हूं दैट आपका जब भी प्लानिंग का फाइनल प्लान ऑफ एक्शन खत्म हो जाएगा, नॉर्मली पहले एक समरी बनता है, समथिंग कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव समरी। मैं आपको बताया भी था, एग्जीक्यूटिव समरी इज नथिंग बट अ समरी फॉर द एंटायर रिपोर्ट। सो इफ यू रीडिंग अ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, देयर कैन बी एग्जीक्यूटिव समरी। इफ यू रीडिंग अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, देयर कैन बी एग्जीक्यूटिव समरी। इफ यू रीडिंग अ सीएजीज रिपोर्ट, देयर कैन बी एग्जीक्यूटिव समरी। एलएफएआर जो हमारा बैंक ऑडिट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव समरी आ सकता है। तो एग्जीक्यूटिव समरी विल इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, important marketing strategy, campaigns, budget amount, target market, maybe just the highlights of the entire strategy will be there as a part of executive summary. ऑब्वियसली आपको प्लानिंग करने से पहले, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सिचुएशन एनालिसिस करना पड़ेगा। दैट मींस एग्जिस्टिंग मार्केट का डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे मार्केट में, कंपटीशन एनालिसिस क्या बोलता है, एंड सर ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वो किस तरीके से काम करने वाले हैं, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होना चाहिए। इनडायरेक्टली आपको कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होने चाहिए। सो यू हैव टू अप्लाई SWOT एनालिसिस, एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद SWOT एनालिसिस, यू रिमेंबर फर्स्ट स्टेप वाज सिचुएशन एनालिसिस, सेकंड स्टेप वाज सेटिंग योर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दैट विल कम इनटू एक्चुअली पिक्चर। तो इन्होंने प्लानिंग के बारे में स्टेप्स लिख के दिए ही नहीं है, इन्होंने जनरल स्टेप्स लिख दिए हैं।
तो अनफॉर्चुनेटली तुमको बस ये आंसर ऐसे लिख के आना पड़ेगा। रियल लाइफ में अगर आप मुझे पूछोगे तो मार्केटिंग एनालिसिस एक पहला स्टेज होता है, उसके बाद में अकॉर्डिंगली अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस निकाले जाएंगे, उन ऑप्शंस को, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर एक कॉम्बिनेशन चूज करेंगे या एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे, उसके लिए फिर बजट बनाया जाएगा, फिर किसके थ्रू मार्केटिंग करना है, खुद से करना है, थर्ड पार्टी के थ्रू करना है, वो डिसाइड किया जाएगा, ऑब्वियसली टारगेट मार्केट पे फोकस किया जाएगा और फिर उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। मेरे हिसाब से वो जो स्टेप्स है वो कुछ अलग ही है, रियल लाइफ में भी कुछ अलग ही रहेंगे। थियरिटिकली अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में उन्होंने थोड़ा हैपजार्ड तरीके से आंसर को लिखा है, गलती से अगर एग्जाम में आ भी गया तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए, उसके बाद सर कंपनी ने अपना खुद का सिचुएशन एनालिसिस करना चाहिए, उसमें सॉर्ट एनालिसिस भी आ जाएगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने वाला बात भी आ जाएगा, इसके थ्रू ऑटोमेटिकली इनके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगा कि आप कैसे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले हो, एंड ऑब्वियसली बाद में स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करोगे और इवैल्यूएट करोगे, दैट इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। बहुत ही घटिया तरीके से आंसर को लिखा है इस चीज को, दिस कुड हैव बीन अ वे बेटर आंसर, बट यस there are some areas where improvement is required. This is one of the areas. So without wasting your head on this, quickly spend 2 minutes, पढ़ लो एक बार, गलती से ये अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। डन गाइस? सो अकॉर्डिंग टू मी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसमें इंपॉर्टेंट क्या मैंने आपको मार्क करवा के दिया है, मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, मार्केटिंग प्लानिंग एक बार देख सकते हो, आई विल नॉट से वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, एक इंटरेस्टिंग लाइन है जो मार्क करनी है आपको, कम टू पेज नंबर 114। जो फंक्शनल स्ट्रेटेजीज है ना, यही इंपॉर्टेंट क्या है, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो अगर आप मुझे पूछोगे बिना फंक्शनल स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग टू मी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस लेवल या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज थे वो अचीव हो ही नहीं सकते, बिकॉज आपके जो कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज होते हैं ना वो काफी जेनरिक होते हैं, स्पेसिफिक जो है कि उनको कैसे अचीव करोगे उसके लिए आपको फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनाना एसेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस का आपका ऑब्जेक्टिव है, आप प्रोडक्शन फैसिलिटीज के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाहते हो, अरे भाई उसके लिए आपको बेस्ट पॉसिबल रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जिसके थ्रू आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक्चुअली में बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप कम से कम प्राइस के अंदर अच्छा कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर पाओगे। सो बेसिकली आपके जो बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, या जो स्ट्रेटेजीज होते हैं उनको अचीव करने के लिए फंक्शनल स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी एज वेल एज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू मी बिना उनके वो अचीव नहीं हो सकता है। ऑल्सो हमारे पास में ना बहुत सारे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैं, उनके अंदर काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज भी हैं, उन सबको ना एक पाथ मिलेगा, दे विल हैव अ यूनिफिकेशन, दे विल ऑल नो व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन। सो कैन यू सी इट स्पेल्स आउट हाउ फंक्शनल मैनेजर्स विल वर्क टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटजीज नहीं हुए ना एट फंक्शनल लेवल्स, दे विल बी मिसगाइडेड समवेयर, दे विल नॉट बी focused towards the overall business objectives. To avoid that kind of situation, you need to have this kind of dedicated functional strategies in place. They will help you to ensure you achieve your overall business objectives and get the right focus of all your functional managers towards the right business objectives. ये दोनों मेरे हिसाब से important roles हैं जो एक functional strategy play करता है। अब जरा नीचे आ जाओ, why do we need functional strategy? General question. Number one, they provide a sense of direction to the functional staff. Logical है. They act as a
facilitator to implement all your corporate and business strategies. ऊपर के दोनों पॉइंट सेम कॉपी पेस्ट कर दिए, उसके बेसिस के ऊपर ही नीचे के 3-4 पॉइंट बनाए. देखो, दैट इज द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज. ऑब्वियसली फंक्शनली यदि अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको कंट्रोल कर पाओगे अगर आपके अच्छे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. तो इट विल ब्रिंग दी हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शनल मैनेजर्स. एंड सर, सारे के सारे फंक्शनल मैनेजर्स अलग अलग सिचुएशंस को भी अच्छे से डील कर पाएंगे और मे बी एक कंसिस्टेंसी रहेगा in terms of how they deal with a particular situation, because all of them have a unification of objective. All of them are working towards achieving common business and corporate objectives. So yes sir, एक functional level strategies मुझे logically एक कंपनी को साथ में रख करके अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है. बिल्कुल लॉजिकल है. इनमें से मेरे हिसाब से ये पॉइंट, दिस वन and this, these three are the important ones. If you know these three also, you are comfortable. That's it. I think this marks the end of entire chapter number 6. You can spend 2-3 minutes, quickly look into this. If you have any doubt, ask me. Otherwise, we can proceed to the next chapter. That is chapter number 7. Quickly spend 2-3 minutes. Done? Any doubts, guys? Okay, one student has asked a doubt, what is affiliate marketing? Now, what are affiliates? Affiliates are basically you can say indirectly business partners. या आप बोल सकते हो indirectly your commission agents, in other words. So basically, if you talk about e-commerce world, for example, let's say, I would say when it comes to OnePlus, I think if I'm not wrong, it is sold normally officially through Amazon, और Amazon के साथ में भी कुछ ना independent जो vendors रहेंगे उनसे affiliations रहेंगे. तो it's simple nowadays. They believe rather than OnePlus doing a mass level advertising, that can be probably a smaller amount. Otherwise, जो हमारे affiliates है, अलग-अलग जो हमारे strategic partners है, उनको आप बोलो that the more quantity you sell, obviously you'll get a higher commission comparatively. So rather than deciding a selling price, you determine one selling price across India and you give them a commission on depending upon the quantity they're selling. So it's basically quantity based आप commissioning पे कर सकते हो, या जो आपका जितना presence create करेगा किसी particular area में, accordingly आप उसको अलग अलग category का dealership assign कर सकते हो. तो affiliate based marketing का मतलब indirectly हो सकता है कि आप अलग अलग strategic partners बना लेते हो. Rather than you doing marketing for yourself across the world, you have affiliates or your strategic partners जो आपके लिए काम करते हैं अलग अलग लेवल के अंदर. That is in general meaning of affiliate marketing. Now it is very subjective, it's open ended. तो ये सेल्स कमीशन के बेसिस पे काम कर सकता है, या मे बी समटाइम्स कितना क्लिक आप जनरेट करते हो, कितना वेबसाइट्स कन्वर्जन आप जनरेट करते हो, उसके बेसिस पे भी मिल सकता है. दे ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ओवर अ ब्रॉडर हेडिंग दैट इज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग. शुड वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर गाइस? Okay, let's come to chapter number 7.
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। बेटा इस चैप्टर में ना दो चीजें हैं, एंड आईसीआई का जो फेवरेट पार्ट है वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है। बहुत रेगुलरली स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाले पार्ट पे एक क्वेश्चन आता है। आई थिंक रीसेंट 2 अटेम्प्ट्स के अंदर भी आई थिंक वन ऑफ द अटेम्प्ट्स दे आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ओनली। इट्स अ वेरी कॉमन एरिया। विल स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, that what kind of different types of leadership types of leadership styles which exist across the world। कुछ जनरल कंटेंट रहेगा। नॉर्मली एक स्ट्रेटेजिक लीडर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो सब डिस्कस करेंगे अंडर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। वहां पर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, उनका डिफरेंस भी दिया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ईजी एरिया ऑल्सो। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, हर टाइप का क्या जनरल एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सब आएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर। सो देयर आर 2 parts of this particular chapter. One is on organization structure and second is on strategic leadership. Let's start with strategic leadership first because that is the most frequently asked area from chapter number 7. So do one thing, in your modules, come to page number 145. Leadership and strategy implementation. नाउ देखो मेरा बात सुनो, हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में अगर आप मुझे पूछोगे अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आउट ऑफ दी स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स आपने सही ऑल्टरनेटिव्स को चूज कर लिया होगा। अब बात आता है स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का। टू इंप्लीमेंट ए गुड स्ट्रेटेजी यू नीड राइट सेट ऑफ लीडर्स एट टॉप लेवल एज वेल एज बिजनेस लेवल एज वेल एज फंक्शनल लेवल। तो आपके पास में अलग अलग टाइप के जो लीडर्स होते हैं वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन सा लीडरशिप स्टाइल कब सूटेबल होता है वो डिस्कस करेंगे। एक लीडर का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, फिर सर थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर पढ़ना पड़ेगा। फिर सर जब आप एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो तो शायद कभी कभी एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर भी बदलाव लेकर के आना पड़ता है। क्यों बदलाव लाना पड़ता है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एंड वंस यू इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटजी, बाद में आएगा इवैल्यूएशन पार्ट, दैट विल इंक्लूड योर स्ट्रेटजी कंट्रोल, स्ट्रेटजी ऑडिट, वो सब कुछ हम आने वाले चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करने वाले। तो 7 और 8 अगर मुझे पूछोगे आप, ये इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल के ऊपर रहने वाला है। चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी वाज डन टिल चैप्टर 4, 5 एंड 6। शुड वी गेट स्टार्टेड गाइस? लेट्स स्टार्ट विद लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। अगर आप मुझे बात सिंपली पूछोगे दैट हमेशा से राइट सेट ऑफ लीडर हैज बीन इंपॉर्टेंट। Now I would say it's not just one person in today's world. Now it's more about the entire set of leaders. Obviously the people who are at the top, at the corporate level, they always are generally more important. I will not say the people working at business level and function level are not important, but the people at the corporate level, they are the pathfinders. They create an overall path, they create a great vision for the organization. So obviously if you ask me, leadership is a very essential part if any business organization needs to succeed. So talking about that, according to them, theoretically, there are 2 types of leadership styles. Can you see? There are 2 approaches to leadership. One is called as transformational leadership. Second is called as transactional. Let me warn you, they are little biased. These people, the author likes transformational, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा बाइस तरीके से उसके बारे में लिखा है। According to me, both have their own important roles to play in different types of organization. Let's discuss about transformational leader. So basically, these are those set of leaders जो सर एक organization जो बहुत बुरे वक्त के through the organization is not doing great today, they need a significant turnaround strategy, they need a significant boost from this lowest possible level in their overall लास्ट 5-10 ईयर्स का टेन्योर, और उनको सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहिए। मतलब एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड का जरूरत है। मतलब एक कंपनी का सिचुएशन शायद बहुत ग्रेट नहीं होगा, या मे बी कंपनी ठीक कर रहा है बट बहुत रेवोल्यूशनरी कॉम्पिटिटर्स एंटर कर चुके हैं और उनको यहां से बाहर निकल करके कुछ अलग करने का जरूरत है। तो आप बोल सकते हो नॉर्मली हमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर चाहिए होता है। इनके हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एक बहुत एंथुसियास्टिक इंसान रहेगा, बहुत सिग्निफिकेंटली मॉरल बूस्ट करेगा सारे एम्प्लॉइज का, उनको अलग लेवल के स्केल पे लेके जाएगा। सो बहुत अच्छा बात लिखा है, देखो जरा ध्यान से। Transformational leadership style uses charisma and enthusiasm. I think that is everywhere. Even transaction leader करता है, but इनको लिखना है इसके बारे में अच्छा। To inspire people, to exert them for the good part of the organization. Okay.
दे आर नॉर्मली यूजफुल इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट्स, मतलब जब एनवायरमेंट अच्छा नहीं है एक कंपनी के लिए, या एक इंडस्ट्री का शुरुआत वाला पार्ट है या एंड ऑफ लाइफ साइकिल है. ऑब्वियसली एट द स्टार्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव टू द इंडस्ट्री दैट यस दिस इंडस्ट्री इज रेलिवेंट, या हमारे टारगेट मार्केट को समझाना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है. और मे बी व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ योर लाइफ साइकिल ऑब्वियसली तब भी मुश्किल टाइम रहेगा. या सर एक ऐसा कंपनी जो बहुत पुअर तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो चाहते हैं कंपनी को इंस्पायर करके सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आना, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. सो सर, transformational leader, they will offer excitement, vision, intellectual stimulation, personal satisfaction. That means, you know, a person who will try to bring in about significant changes in the way a company works. So, you know, maybe एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम किया जाएगा. दे इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन द मिशन, दे विल क्रिएट मोर ऑफ अ शेयर्ड विजन, दे विल हैव अ ह्यूज फॉलोअर्स, और वो ड्रीम और विजन को अलग तरीके से लेके जाएंगे. एंड ऑब्वियसली सर, सच अ लीडर विल मोटिवेट देयर फॉलोअर्स टू डू मोर देन ओरिजिनली affected to do so by stretching their abilities. I think that's what every leader want, but you know they are pretty much biased towards a transformation leader according to me. मतलब ये आपको आपके नॉर्मल एबिलिटीज के बियॉन्ड काम करने के लिए फोर्स करेगा. इनके हिसाब से वो लीडर कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर. देखो, इट इज गोइंग टू बी रियली स्टूपिड टू आर्ग्यू अबाउट दिस, बट हाँ, लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, स्टीव जॉब्स वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. अब बोल सकते हो ऐसा, मतलब इट कैन बी अ बिग क्वेश्चन. टिम कुक, अभी एक बच्चे ने पूछा, सर टिम कुक, यू नो, is this person a transformational or a transaction leader for Apple? I would say people will count on this, that this guy is a transaction leader. I would say it doesn't matter. What matters is, has Apple done phenomenally well under Tim Cook? He has created a different Apple altogether, I think, according to me. And people will talk about this after 10-15 years, because maybe Steve Jobs had a vision at a different time, but Tim Cook did something phenomenally well in a time which was not visualized by anyone, according to me. So it's going to be very subjective. In my understanding, I like more of transactional leaders. The reason being, they don't want to do, you know, something risky for an organization. I'm not saying not taking risk is great. So it depends upon at what scale our organization is. If a company is not doing great at all, you definitely need someone who's more of transformational in nature. But if a company is doing good, what about this level has to go to a different level? For example, talk about you know, Mr. Sundar Pichai. He's a transaction leader and Google is doing phenomenally well under him. Do you get my point? So you cannot say that you have to be a transformation leader only to do great. Do you get my point? Mark Zuckerberg can be a question part. Maybe he was transformational when it came to, you know, designing a new social media you know, outlook altogether, but today is more like a transaction leader, according to me. He's not doing, you know, something to make any transformation. He believes everything needs to go in an incremental way. We have already created something phenomenal. So, you know, that's the kind of difference which will always be there, and it's stupid to sit on a piece of paper and compare this, according to me. That is not right. Yes, from analysis point of view, who did what and what company did on that point of time can be understandable from, you know, stakeholders or, you know, you can say investors point of view, but comparing to leadership qualities and deciding what you like and what you can become, I don't think leadership is something which is somewhat inherent in you, and this is something what you inherently absorb from the outer world around you. So maybe it's not by birth, but it's basically what you inherently absorb around things going, you know, in your business environment or in your personal environment. Transactional leadership style. So basically they focus more on designing systems. I'm sorry, this is stupid. What is designing system? Every company needs designing, you know, systems. Like, you know, what about processes? हर किसी को process चाहिए यार. इनके हिसाब से ये system बनाने वाला आदमी है, control बनाने वाला आदमी है, ये वो इंसान है जो अच्छे से काम करके देगा. That is how bookishly they are writing this. So they focus on designing system, controlling the organization activity. They are associated with improving the current situation. मतलब incremental growth. They try to build on the existing culture and enhance current practices. Okay. They use authority of its office and exchange rewards such as pay, etc. ठीक है, they prefer more a formalized approach to motivate, strategize. Okay, I understand this, and they are appropriate. Exam के लिए mark कर लो. In a settled environment, growing or mature industries and organizations that are performing well. So basically, someone, you know, maybe in a mature industry needs just an incremental improvement. According to them, theoretically, transaction leader is good. Now, this is subjective, guys. I'm not really happy with the way they have written this. The style is better suited in persuading people to work efficiently and run operations. They have just written general content what they wanted to write. Unfortunately, तुमको ये याद करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा. तो चुपचाप पढ़ लो 2 मिनट के लिए और तुम ऐसा लिख के आ जाना. एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, क्योंकि आपके ऑथर को वही पसंद है.
पर दोनों में भी क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए. दे कैन गिव यू सिचुएशन, एक के अंदर मेच्योर इंडस्ट्री, आप अच्छा काम कर रहे हो, कौन सा स्टाइल चाहिए, एक के अंदर टर्न अराउंड की स्ट्रेटेजी लगानी है आपको, तो आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है. N. Chandrasekharan, if you ask me, I would say this guy has been transformational when it comes to TCS. But now, currently, when he's sitting at Tata Sons, he's playing a role of a transaction. So it's basically a combination of both. So that's what I'm saying. It's subjective. One person can also play both the roles. It's not that you are by birth transformational or by birth transactional. Do you get my point? It's basically how you absorb things around you. And one person can be both, 100%. There's no question about this. So N. Chandrasekharan, when it comes to TCS का next development, theoretically आपके हिसाब से तो ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए, और टाटा सन्स के अंदर इज मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शनल. Done. Next, managers have 5 leadership roles to play in pushing for good strategy execution. This is a very, very important question. I don't expect this question in the coming attempt. The reason being, this question was asked, if I'm not wrong, either in May 19 or November 19. In one of the attempts, they have asked the question on this. So again, from exam point of view, definitely ICAI has asked this multiple times. तो इनके हिसाब से एक अच्छे स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक लीडर का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? सबसे पहला, every leader should stay on top of what is happening across the organization. Obviously, you as a leader may not be present in all meetings, may not be present in all seminars, but technically as a leader, you need to be aware of everything what is happening around the organization so that right decisions can be taken at right point of time. So number one, staying on top of what is happening, closely monitoring all the progress, discovering all the issues, and learning what obstacles are there in path of my good strategy execution. That is step number one. Number two, you have to promote a culture and what is esprit de corps? Esprit de corps is a situation where you have like a common, let's say some employees are doing great. What you need to do is create a culture where others also celebrate the success of some people who are doing great. So basically, recognize the people's effort, create a culture where you recognize the efforts of even, people working at the lowest possible levels as well as the people working at the highest possible levels. That kind of culture is very essential. And if you can create that kind of culture, you can actually help a good strategy execution. Next, keeping the organization responsive to changing conditions. Obviously, that is the essential part. Remember, even after you design the best possible strategy, while execution, you might realize your strategic planning can actually go wrong. Choice of strategy can go wrong. You need to be adaptive, to make right changes. Remember, partly proactive, partly reactive. This is about partly reactive. Next, exercising ethical leadership. That means being unbiased, recognizing who is doing wrong at what point of time, what changes needs to be taken, and create an overall environment where people actually believe that yes, there is no office politics out there, there is lack of biasness, people are pretty independent, they recognize each other's efforts. And last one, wherever you believe changes are required in the strategy, you push corrective actions right away without even thinking how this can impact the some leaders who might believe that our strategy was the best strategy. Sometimes the changes needs to be there in the form of corrective actions when you are implementing a right strategy. So basically ये एक जनरल रूल है एक लीडर का, ताकि वो एक स्ट्रेटजी को अच्छे से इंप्लीमेंट होने में या एग्जीक्यूट होने में हेल्प कर सकता है. बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट्स है. क्विकली स्पेंड 2 minutes.
Done? Okay. Before we move on to the entrepreneurship and entrepreneurship part, one student has wrote something. Sir, is it compulsory that transactional or transformational leadership should be limited to only one person? I mean, it can be a group of people. I always agree with that. Rather, I believe it's always a group of people who is actually the part of the leadership. It's not one person. But I'll tell you guys one thing. Unfortunately, that's how the business world works. The founder, or you can say the CEO, or anyone who is there in front of the camera gets the limelight. And that's the worst part of, you can say world media or global media. They pick up faces and they just talk about those faces. It's us who create these faces. Do you get my point? So it's never one person. It is always a set of people in that company at top level or at the initial days who creates that company. It's never always one single person. I think the role is of everyone around you. And I'll tell you what, I think if I'm not wrong, I did share about this in the classroom as well. When I think last year only, Jeff Bezos, the founder of Amazon, he had a divorce with his wife, and people started saying that suddenly she's a billionaire. You don't know the story. Maybe she was the one who would have given the time and maybe the money to invest or probably start the business altogether. Maybe she was a billionaire from day one. Maybe she didn't take the limelight. She maybe gave her, right to make a decision to someone else. So I'm just trying to say, it's always the face which comes into picture because of the global media, I would say, and it applies everywhere in the world. Let's not talk about Indian media. I don't like that at all. So I'm talking about the global level. That's how the phenomenon is. It's always lot of people who actually creates an organization, and yes, it's always multiple people. They form part of the leadership. It's never one person, according to me. So yes, I completely agree with what you are saying, but unfortunately the recognition comes from one person altogether. That's the unfortunate part. I hope you understand what I'm trying to say. Do you get that? Like, okay, for example, I think a lot of you might not even know about Steve Wozniak, right? Like, that guy was probably the brain behind Apple, if you ask me, in terms of products, in terms of technology. That was the, you can say, guy who made technological breakthroughs. That is why Apple became Apple. Yes, Steve Jobs had a vision. He knew how to sell it. He knew how to get money. But maybe to get and to do all this, you need the right product as well. So there was someone else who got him the right product. So, was not recognized for a lot of years. He got the limelight after a lot of years, according to me. Anyways, without arguing on this, we shall proceed. Can we continue, guys? Okay. I hope you know that there are a lot of co-founders for, this, I forgot, Alibaba also. It's not just Jack Ma, right? Jack Ma is a face. There are so many other co-founders. They're also billionaires today, just for information. Read about them. Even Byju's, Miss R. Byju is famous, but, his brother, I think his wife, and there are 2-3 other directors. They are all part of the organization who created Byju's, but it's just one face, which we all know, not everyone else. I'll share the report also with you if you really want. Anyways, I think let's proceed. Building a strategy supportive corporate culture. So we need to first understand what is a corporate culture. This used to be a question in the old syllabus where they used to ask for 2 marks. What is the corporate culture concept? Do you get my point? And how it can impact your strategy part. So we'll talk in detail about, for 2 minutes, what is a corporate culture? If you ask me, corporate culture of a company means indirectly the aura, or you can say the vibe which you get from a organization. So basically, what kind of people work there, what kind of preferences of those people who are working there, what kind of clothes they wear, what kind of language they use, they face clients or they don't face clients. So overall, this creates a corporate culture. So I would say corporate culture is a very important part that always needs to be kept in mind while designing a particular strategy, because if the strategy is not in line with the existing corporate culture, it can fail miserably. And if it is, let's say, in line with the corporate culture, then it can do wonders for the company. So, understanding what is the corporate culture and then designing a strategy can be the best way. Can you see? It refers to companies' values, beliefs,
business principles, traditions, ways of operating, and the overall internal work environment. The sociological forces combine to define an organization's culture, beliefs, and practices that becomes an integrated part of company's culture. It can originate anywhere from one person. So, maybe in a company, the founder's values are more important, and because of this particular person, the entire culture seems either conventional in approach or extremely open-minded or extremely narrow-minded. So that's basically either one person's impact, or it can be impact of a lot of people working there, or departments, or maybe from top level or bottom level of the hierarchy. It's subjective. The impact can come from anywhere. What is important? The corporate culture can either become an ally or it can become an obstacle. It's simple. If you understand the corporate culture and if you design a strategy which फिट्स और मैचेस विद कॉर्पोरेट कल्चर, ऑब्वियसली वो स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगा और आपके लिए फ्रेंड बन जाएगा और आपको सक्सेसफुली वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा. एंड इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट कल्चर, ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. देखो, व्हेन द बिलीव्स, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, ब्ला 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 supports a company strategy, it's compatible with the culture, obviously it will become a valuable ally in the implementation, or vice versa. If it doesn't match, it can be a problem creator for sure. This can be a 2-mark question. Stupid, but yes, it can be. Read quickly. पढ़ा? एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट है जिसको हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे. गुड डाउट, आई लाइक दैट डाउट. विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. लेट्स फर्स्ट फिनिश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड entrepreneurship and intrapreneurship? I think if I'm not wrong, I taught this word to you guys, these words to you guys in CA Foundation itself, if I'm not wrong. If you are from Foundation, I guess I would have taught you these words. So according to them, there is a technical difference between entrepreneur and an intrapreneur. Technically, entrepreneur is a person who conceives a new idea, is basically the founding member, you can say one of the founding members. So basically, apparently a person who sees an opportunity, who conceives a new idea, who takes all the risks along with other set of people, gets the money, gets all the resources, implement the idea and take company to a different level. That's an entrepreneur. So entrepreneur is basically the founding member. Intrapreneur, on the other hand, according to them, is not the founding member. So basically, maybe, if you ask me, Sundar Pichai is not the entrepreneur according to them, is the intrapreneur, because Sundar Pichai was not the founding member of Google, but currently heads Google in terms of all decision making, if you ask me. So, from that point of view, intrapreneur is a person who was maybe holding a managerial position since a lot of years, or maybe was working as an employee in the company, but today sits at a position where he or she can make all important decisions for that particular company. But the technical difference is, intrapreneur was not the founding member. Entrepreneur is generally the founding member. That's the technical difference between entrepreneur and a intrapreneur. So if you ask me, entrepreneur normally has to be a founding member and intrapreneur doesn't have to be a founding member. This person can still be at the top position in the company, but he was not the founder. Can you see? Entrepreneurship is an attempt to create value through recognition of business opportunity. We'll talk about the basics. Can you see? It is an attitude of mind to seek opportunities, take calculated risks and derive benefits by starting or running a venture. Can you see? The entrepreneur is the one who, they're trying to define entrepreneur. I'll tell you what, entrepreneurship is something which cannot be defined or it cannot be taught. You can experience this, and this is something which is really beautiful. I'm sure a lot of you will get to experience this in some parts. Maybe some of you will be successful,
I would pray that all of you are successful, but we all know the practicality. Some of you may not succeed as well, but that's how the process is. So can you see, a person who initiates or innovates a new concept, it doesn't matter. Sometimes even copying a good concept is also good. Next, recognizes and utilizes opportunity. That is absolutely important. Arranges and coordinates all the important resources. Faces all the risks and uncertainties. Establishes a startup company. I will not use the word startup company, but starting something new, I would say. Adds value to a product or a service, take decisions to make the product or service a profitable one, and is responsible for the profits or losses of the company. Obviously, that's basically an entrepreneur. Concept of entrepreneur. Can you see? Many people use these terms interchangeably because they think they both are same. But yes, there are some technical differences. Can you see? While the former refers to a person who starts his own business, we're talking about entrepreneur with a new idea. The latter, the entrepreneur, represents an employee who promotes innovation within the limits of a company. So entrepreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of an organization. So basically, you are indirectly holding a managerial position in the company where you are supposed to, take decisions as per the boundaries of the company. He is an employee of a large organization who is vested with the authority of initiating creativity, taking innovative, actions or changes in the company's products or services. So basically, uska kaam bhi bahut, challenging. Obviously, the job of entrepreneur is extremely challenging. They get recognition and reward for the success achieved by them. Very, very logical. Again, don't ask me this stupid doubt, sir. Entrepreneurship अच्छा है या entrepreneurship अच्छा है? बेटा तुम सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हो, ऐसे डिसाइड नहीं होता है. You have to, become little mature. I think with time, you need to understand if you have the capability to come up with something new. That's a good idea. Become an entrepreneur, start something new. If you believe you don't have that kind of skill set, but you have a skill set where you can spend, your loyal number of years with a company and maybe run that organization after certain years, become an entrepreneur. Both are absolutely fine according to me. It is about choice of people. But do something, I would say. Don't sit at home. That's my expectation. That's the difference between entrepreneur and a entrepreneur. Are we good? So one student asked this question, sir, concept nowadays, solopreneurship. What I understand from the word solopreneurship is basically one individual person running the entire organization. Theoretically, it is good. In practical world, I believe if you really want a phenomenal growth, you need people. You cannot do everything on your own. Rather, I think if you have this kind of I would use the word, OCD indirectly, obsessive compulsive disorder, that you have to do everything on your own. You have to be part of everything. It's not going to help you to grow significantly because growth doesn't come individually. It always has to be a collective effort, and I believe you are going to need people. And if you believe in people, only then the other side of the people will actually believe in you. So according to me, individually you are okay, with people you are better. Come to the starting of this chapter now. We need to understand organization structure and types of organization structure. Now, if you ask me, whenever a company
chooses a different set of strategy. Let's say, for example, for some amount of years as a company, you have been, following a stability strategy. If you ask me, I keep giving this example because lately I've been reading more about this company, Tata Consumers, which I talked about, So this company, with a lot of other organizations within it, it's a bigger organization which has a lot of smaller entities also. There was a stability approach. Everything was going absolutely fine in individual companies like Tata Coffee, Tata Tea. Individually, they all were doing great. But then they realized that maybe the collective effort, or maybe, a new approach towards maybe becoming a pure FMCG can be a better approach. So maybe after certain years, a company realizes or recognizes that now they believe they have the potential because of their market reputation or market presence, that they can actually do something phenomenally better than what they have been doing as of now. So maybe after 5-10 years of good, stable growth, now they're looking for significant expansion or growth. So when these kind of changes takes place in a company, it's going to impact your existing organization structure also. Like for example, Tata Chemicals, Tata Global, they made a new company, Tata Consumers. They took everything from Tata Global, something from Tata Chemical, and made a new organization. These kind of restructurings becomes an essential part. In this case, they shuffled the entire organization, according to me. All smaller products they shuffled. But theoretically, we're just talking that will we have to make some changes in the structure of the organization. That means how the hierarchy flows. क्या उस hierarchy में कुछ changes लाने पड़ेंगे? Essential part है यार. अगर एक कंपनी ग्रो करना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, आपको hierarchy में changes लाने ही पड़ेंगे. आप existing hierarchy के basis के ऊपर हमेशा grow नहीं कर सकते हो या हमेशा divest भी नहीं कर सकते. तो आप जो भी changes लोगे, इसका impact आपके hierarchy के ऊपर आएगा, आपके organization structure के ऊपर आएगा. तो देखो ये क्या बोलता है theoretically. जैसे जैसे नए स्ट्रेटजीज को फॉर्म किया जाएगा, कुछ न कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, मतलब हाउ डू यू रन अ कंपनी, वो प्रॉब्लम्स आने लगेंगे. इसकी वजह से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगा. शायद आपको एक नए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको स्टैब्लिश करने के बाद में शायद आपका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव भी हो जाएगा. तो बेसिकली आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा है दैट व्हेन यू मेक न्यू स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, the change in organizational structure may become necessary, and if it is the situation, identify that on right time, make changes at that right point of time, so that the company doesn't have negative performances in the future, and it should improve the performance in the future. इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर को बदल देना चाहिए. तो अब हमको अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में पढ़ना है. इफ यू आस्क मी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछोगे, आर ग्लास स्ट्रक्चर, जो काफी कॉमन है. आई थिंक रिसेंटली या तो मई या 19 नवंबर के दोनों में से कोई तो एक अटेम्प्ट के अंदर आर ग्लास स्ट्रक्चर पूछा गया है, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. आई वुड से इवन नेटवर्क स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कंपेरेटिवली. उसके अलावा ये सब ना इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ज्यादा फोकस आपने करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक्स, नेटवर्क एंड आर ग्लास के ऊपर, अगर आपको ज्यादा सोचना ही है तो. लेट्स स्टार्ट विद दी आर ग्लास स्ट्रक्चर, जो सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मुझे लगता है और आज के तारीख में बहुत लॉजिकल स्ट्रक्चर है. एंड अभी ड्यू टू कोविड सिनेरियो, this lot of companies would have faced significantly, according to me, and there have been significant layoffs in a lot of countries across the world, in a lot of industries, and some of that is definitely impacted by R glass structure. Let's start with the R glass structure first, then we'll go to the other structures. एंड गाइज अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ना, इन्होंने इसको चेंज किया ही नहीं है बहुत सालों से. सेम चीज कॉपी पेस्ट चलते आ रहा है. हर कंपनी जरूरी नहीं है इनमें से कोई स्ट्रक्चर फॉलो करे, उनका अपना स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं होता है. हाँ, पर थियोरेटिकली ये बिल्कुल लॉजिकल है, मैं मना नहीं करूंगा. लाइक अगर आप मैनेजमेंट की बुक्स के बंडल से बात करोगे तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक चीज कंट्रोल से कंट्रोल वी की है मेरे हिसाब से. लेट्स स्टार्ट विद आर ग्लास स्ट्रक्चर. व्हाट इज आर ग्लास स्ट्रक्चर? दैट इज द डायग्राम फॉर आर ग्लास स्ट्रक्चर. ये बोलता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो रिक्वायरमेंट है हमारे यू कैन से अलग अलग फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का, जो मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजर के लेवल पे काम करते हैं, उनका जो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है वो श्रिंक होते जा रहा है एक कंपनी के अंदर बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. एट टॉप लेवल नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज सेम, at lower level number of people required is same. Please don't misunderstand this कि इतने लोग जो यहां पर है 100 है तो यहां पर भी 100 होंगे, ऐसे इक्वल नहीं है. ये बोल रहा है जो रिक्वायरमेंट है टॉप लेवल एंड लोअर लेवल पे वो इक्वल है. द रिक्वायरमेंट हियर टू रन द
टू बेसिकली मैनेज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एट टॉप लेवल. बेसिकली टॉप लेवल पे जो एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट है वो सेम है, नीचे लोअर लेवल पे जो काम करने वाले एग्जीक्यूशन करने वाले लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है. बट इनके हिसाब से मिडिल लेवल पे जो इन लोगों को ओवर सुपरवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं इनके काम को, जिनको गवर्न करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ऑटोमेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ दे बिलीव ड्यू टू गुड information technological practices, these people can directly control the work of lower level members. Like I keep giving this very basic example that 15-20 years back when we talk about a tours and travels company, if as a tours and travels company के owners, let's say there's a 5 owners, 5 partner ने एक tours and travels का company start किया, if you have 1000 कार्स को चलाने के लिए 1000 ड्राइवर तो लगने ही वाले हैं आपको. उन 1000 ड्राइवर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए शायद आपको 50 या 100 सुपरवाइजर्स भी लगने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगे कौन सा ड्राइवर कौन सी कार को लेके किधर गया है. बट इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन टॉक अबाउट ओला, उबर, यू जस्ट नीड अ स्ट्रॉन्ग मोबाइल एप्लीकेशन, मे बी 2-3 people or 5 people who can run the entire fleet of 1000 or 10,000 cars in a particular city and can control everything because there is a huge amount of automation. So people required at middle level, इनका requirement shrink होते जा रहा है because of changes in information technology, because of more automation. That is why they say ये structure बहुत hazardous है आने वाले time के अंदर. Automation is not great for all industries, definitely not great for humankind because people will start losing jobs in a lot of industries. I'm not saying that does not mean automation is not good at all. Obviously it is doing brilliant in a lot of industries, but from unemployment point of view it can be really bad also. So yes, this is called as hourglass structure. देखो, in recent years information technology and communication have significantly altered the functioning of a company. The role played by a middle management is diminishing. The tasks performed by them are increasingly being replaced by technological tools. So can you see in hourglass structure जो हमारा मिडिल लेवल है, मिडिल लेयर जो वो खत्म होते जा रहा है और छोटा होते जा रहा है. द स्ट्रक्चर इज अ शॉर्ट एंड नैरो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बिकॉज जो ऊपर टॉप लेवल और लोअर लेवल पे रिक्वायरमेंट है वो सब सेम रहने वाला है. Contrary to traditional middle managers who are often specialists, managers in a hourglass structure are generalists and perform very wide variety. Basically जो मिडिल लेवल पे रहने वाला भी है ना वो जनरल मैनेजर रहने वाला है, वो हर चीज को ओवरकम करने वाला है. इन दोनों चीजों को मार्क करना है, ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा. तो सर एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाएगा, डायरेक्टली लोअर लेवल टॉप लेवल से अगर कोऑर्डिनेट करेगा तो बहुत जल्दी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग होगा. तो रिड्यूस कॉस्ट, सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग, the authority shifted more close to the source of information and इनडायरेक्टली अगर आप मुझे पूछोगे जो मेरे मिडिल लेवल है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म ही होगी ये पूरा का पूरा ग्रोथ का. सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोअर लेवल वाले का भी फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, कोई मोटिवेशन नहीं है. लोअर लेवल पर रहेगा, हायर लेवल पर रहेगा, मिडिल लेवल धीरे धीरे खत्म होते होते बाहर निकलते जाएगा. सो इट्स नॉट अ ग्रेट सिचुएशन. कैन यू सी continuity at same level may bring monotony, lack of interest, and it becomes difficult to keep the motivation levels high. And that is why even जो उनका salary component है वो retain करना बहुत मुश्किल होगा. Lower level पे maybe you'll keep hiring new people, but as soon as people become more and more experienced, you throw them out because you believe at middle level हमको ज़्यादा लोगों का ज़रूरत नहीं है. This is the biggest disadvantage of hourglass structure. बहुत ही कंसाइज वर्ड्स के अंदर मैंने ये पूरा समरी बना के दिया है. क्विकली स्पेंड 2-3 minutes, रीड अबाउट hourglass structure. Definitely one of the important questions from exam point of view. Done?
अरे यस और नो? Okay, let's go to the next one. Network structure. I like this one personally, and this is becoming very, very common in the consulting world, if you ask me. So, what really is the meaning of network structure? Network structure is also called as unstructured situation, or let's say no structure situation, or virtual structure. मतलब ये invisible structure है इनके हिसाब से. Let me explain you according to me how this works, just for your information. So let's say any consulting firm, you talk about BCG, McKinsey, Deloitte, any of the consulting firms. Let me give you an example. They've not given the example of consulting firm, but I'm giving you this example because this is where this is frequently used. Okay, talking about any consulting firm, let's say they have their offices across the world. So in India also they'll have office in Bombay, they'll have office in Pune, maybe one in Bangalore, Hyderabad, Delhi or Calcutta, whatever, Chennai, whatever the cities we have. Do you get my point? I'm talking about top cities. सब जगह उनका ऑफिस रहेगा एंड वो सब जगह अलग अलग लोगों को हायर करेगा. सो मे भी हो सकता है उन्होंने कुछ लॉयर्स को हायर किया होगा बॉम्बे के अंदर, मे भी उनके पास में एक कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट आया है इन चेन्नई. डू यू गेट माई पॉइंट? So there in that particular project, they need a MBA in finance, they need maybe a CFA, they maybe need a lawyer, maybe an actuary. So they may not have, let's say, actuary or a lawyer in Chennai office. What they might do is they take the help of the lawyer, which is appointed in the Bombay office. वो आकर के इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा. तो बेसिकली प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनते जाएगा. वो लोग साथ में आके एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे. वंस द प्रोजेक्ट इज डन, दे विल गो बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम. डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स हाउ नॉर्मली अ नेटवर्क स्ट्रक्चर वर्क्स. सो बेसिकली कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. जब तक वो प्रोजेक्ट साथ में काम कर रहे हो तब तक आप सब लोग साथ में हो. तब तक हायरार्की उस प्रोजेक्ट के अंदर कि प्रोजेक्ट लीड रहेगा, अंडर लोग रहेंगे एंड ऑल. वंस द प्रोजेक्ट इज ओवर, यू गो बैक टू योर ओन ऑफिसेस. अब ऐसा भी हो सकता है दैट मे बी लॉयर है ही नहीं इन द एंटायर कंसल्टिंग फर्म अक्रॉस इंडिया. तो आप क्या करोगे? थर्ड पार्टी जो सर्विस फर्म्स है उनका हेल्प ले लोगे. आपको लगता है मे बी लॉयर को हायर करके फुल टाइम रखना ज्यादा एक्सपेंसिव, और आपको जैसा कंसल्टिंग वाला काम आता है वहां पे नॉर्मली लॉयर का एक एवरीडे बेसिस पे जरूरत नहीं पड़ता है. तो मे बी आप दूसरे लॉ फर्म्स जो है उनसे एफिलिएशंस कर दोगे और वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे या हेल्प करेंगे उस प्रोजेक्ट्स के अंदर. तो नेटवर्क स्ट्रक्चर डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रक्चर है. बट क्या होता है, मे बी अगर आप लेट्स से थर्ड पार्टीज का हेल्प लेते रहोगे तो आपका एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ लीगल मैटर्स कभी बनेगा ही नहीं. आपके पास में हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी फ्यूचर में आपके लिए कॉम्पिटिटर भी बन सकता है. तो इनके हिसाब से वो एक अनफॉर्चुनेट चीज है. मेरे हिसाब से द कॉस्ट कॉम्पोनेंट इज एन एसेंशियल पार्ट. आजकल का बिजनेस ऐसा है कि यार आप सिर्फ अननेसेसरली ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते. अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है फुल टाइम तो आपने थर्ड पार्टी का आउटसोर्सिंग करके हेल्प ले लेना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्ट्रक्चर. देखो, a newer or somewhat more radical organization design, network structure is an example of what could be termed as non-structure by its virtual elimination of in-house business function. मतलब जरूरी नहीं है आपके पास सब कुछ in-house function रहेगा. देखो सर, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में सर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे. पीपल आर लिंक्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो कोई हिरार्की नहीं है, एक cobweb like network रहेगा. मतलब people are mixed for that particular group. Once that particular project is done, once that particular project is over, people will go back to where they came from. सर, जब environment बहुत ज्यादा unstable है, बहुत unexpected रहने वाले आने वाले टाइम के अंदर, you don't want to increase your operating cost significantly, you can use this structure. देखो, the network structure provides an organization with an increased flexibility and adaptability to cope up with the technological change. because आपको हर नया टेक्नोलॉजी खरीदने का जरूरत नहीं है, आपको हर बार नए बंदे को हायर करने का जरूरत नहीं है, आप आउटसोर्स करके भी हेल्प ले सकते हो. बट सर, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? The network does have some disadvantages. The availability of numerous potential partners can be source of trouble. Yes, contracting out all important functions से आपके पास में कभी भी उसके अंदर core competency develop नहीं होगा. आप हमेशा non competitive ही रहोगे in comparison to third party players, and their expertise may keep on increasing significantly. तो obviously दोनों चीजें रहने वाली है, मैं disagree नहीं करूंगा इससे. बट हाँ, मेरे हिसाब से इसको और अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं आज के तारीख के अंदर. दिस इज कॉल्ड एज network structure. Quickly spend 2 minutes. This is also called as no structure or virtual structure.
डन गाइस? बच्चे का डाउट है, सर अ कंपनी हायरिंग आर्टिकल्स इंस्टेड ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज इट एन एग्जांपल ऑफ आवर ग्लास स्ट्रक्चर? ज्यादा आर्टिकल्स को हायर कर लो रादर देन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पहली बात तो बेटा नॉर्मली ये कंपनीज जो है ना, आई होप तुमको मालूम रहेगा, कंपनीज जो है वो आर्टिकल्स को हायर नहीं करती है। मतलब ओनली इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ वन सिचुएशन व्हेन यू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो यू आर टॉकिंग अबाउट firms, CA firms, you're not talking about companies. I'm assuming that. Am I right, Nishan Jain? Please reply. Nishant, kindly reply. Good. So, first, you made some little silly mistake according to me. Second thing, आर-ग्लास स्ट्रक्चर में वो बोल रहा है मिडिल लेवल पे लोगों का रिक्वायरमेंट कम हुआ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तुम जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो। आई टेल यू अनफॉर्चुनेटली इन सीए फर्म्स स्टिल आई बिलीव इन आवर कंट्री एंड इवन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड। रादर हम ऑडिट के लिए ऑडिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी बहुत लिमिटेड तरीके से करते हैं आज की तारीख के अंदर। तुम सोच रहे हो उसकी वजह से तुम मिडिल लेवल पे रिक्वायरमेंट खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जो करने का ट्राई कर रहे हो ना, वो क्वालिटी का लेवल खराब कर रहे हो अकॉर्डिंग टू मी। For some areas, you will need a qualified chartered accountant, then that means you should hire a qualified chartered accountant only. Article may not be able to compensate for everything. I hope you understand this. It cannot be an example of hourglass structure according to me. It is going to be a little stupid. मेरे हिसाब से ऐसा consider करना, because आर-ग्लास स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली प्योरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बोल रहा है रिप्लेसमेंट रहा है। इट इज टॉकिंग मोर अबाउट ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। थोड़ा बड़े लेवल पे जाओ बेटा, दैट इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। दे आर ब्रिंगिंग रोबोटिक्स इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, लीडिंग लेस रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एट मिडिल लेवल। दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। समझा क्या? पक्का? आगे बढ़े, चलो। अब कुछ टाइम पास प्रोसेसेस हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, बिकॉज मेरे को मालूम है तुम सबको मालूम रहेगा। फटाफट पढ़ के उड़ा देंगे। टॉक लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर तो बहुत डिफिकल्ट वाला है, मतलब आई एम श्योर सबको मालूम रहेगा। सिंपल स्ट्रक्चर तो इनडायरेक्टली टॉक अबाउट हमारे पास कंपनी का सीईओ, सीएफओ वगैरह टॉप लेवल पे लोग आ गए, उसके बाद में लॉट ऑफ people. So simple structure can be normally kirana store also. So basically a owner or maybe 2-3 partners, under them there are some 5-10 people working. शायद किसी के पास में डेडिकेटेड काम नहीं रहेगा, सब लोग जनरल मैनेजर्स रहेंगे लोअर लेवल के ऊपर। दे विल डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोटे स्केल पे काम करना शुरू करता है, वो सिंपल स्ट्रक्चर से शुरुआत करता है। इवेंचुअली जैसे जैसे वो एक थोड़ा बड़े लेवल पे काम करना शुरू करेगा, दे विल नीड सम डेडिकेटेड पर्सन फॉर परचेजेस, अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर सेल्स, अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर HR, अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तब जाके अलग अलग फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? फंक्शनल। So simple structure may be the owners and then there are suddenly some staff members who will work directly under the owners. That is called as simple structure. Functional structure is when you have dedicated अलग अलग functions के लिए एक एक manager in charge। मतलब हमारे पास में finance के लिए अलग manager है, production, engineering, accounting, सबके लिए dedicated अलग अलग manager आ जाएगा, and उसके अंदर बहुत सारे staffs काम करने शुरू करेंगे। This will be called as functional structure। अभी भी मान लो आप एक आध प्रोडक्ट में डील करते हो, तो आप एक आध प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फंक्शंस रखे हो। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब हो सकता है आप अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे एक प्रोडक्ट का, आपने दूसरे प्रोडक्ट का ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया, तो मे बी आपके पास दो डिपार्टमेंट है, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट। ट्रेडिंग डिपार्टमेंट ज्यादा लोगों का जरूरत नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाते हो। मे बी डिवीजन जो सेकंड वाला है आपका, इट मे नॉट रिक्वायर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ। सो फॉर एग्जांपल कैन यू सी, यू विल हैव सीईओ एट द टॉप, बट देन यू मे हैव डिवीजन ए, डिवीजन बी। शायद हो सकता है डिवीजन बी के लिए मार्केटिंग का जरूरत ही ना पड़े,
बिकॉज मे बी डिवीजन बी डायरेक्टली बिकता है डिवीजन ए के प्रोडक्ट के साथ में, तो मे बी ऐसे आप अलग अलग डिवीजन बना रहे हो, यही इवेंचुअली ग्रो होकर के बन जाता है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, और रादर आई वुड से मल्टी डिविजनल से भी बेटर थियोरेटिकल मीनिंग्स के अंदर बनता है एसबीयू स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब आपका जो एक एक डिवीजन है ना, वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसबीयू बन चुका है। तो मे बी यू हैव कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पर आपके पास में टॉप लेवल पे लोग रहेंगे, फिर आपके पास अलग अलग एसबीयूज आ जाएंगे, हर एसबीयू के अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, कभी कभी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स मिलकर के एक एसबीयू बनता है, समझ रहे हो मेरा बात। तो सर मे बी हर एसबीयू के अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, अलग अलग डिवीजन आ सकता है, और मे बी हर डिवीजन के अंदर भी परचेस डिपार्टमेंट का बंदा अलग हो सकता है, सेल्स का बंदा अलग हो सकता है, मार्केटिंग का बंदा अलग हो सकता है, फाइनेंस का बंदा अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स बनते जाएंगे। सो बेसिकली ये इंटरलिंकेजेस है। शुरुआत कैसे हुआ था? सिंपल स्ट्रक्चर, ओनर्स, एम्प्लॉइज। फंक्शनल मतलब ओनर्स, अब आपके पास में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग मैनेजर आ गया। फिर उसने आपने क्या बोला, अब आपके पास में एक प्रोडक्ट नहीं दो प्रोडक्ट है, तो इन फंक्शंस के ऊपर डिवीजन ए, डिवीजन बी। अब मैं बोल रहा हूं उसके भी आगे मल्टी डिवीजन, मतलब लेट्स से देयर आर 5-7 प्रोडक्ट्स, इनडायरेक्टली मल्टी डिवीजन इज नथिंग बट माय एसबीयू स्ट्रक्चर ओनली। थियोरेटिकली एसबीयू स्ट्रक्चर कुछ अलग से नहीं होता है, इन्होंने आपकी बुक्स में इंक्लूड किया है। रियल लाइफ में मल्टी डिविजनल ही आपका एसबीयू स्ट्रक्चर कहलाता है, जहां पर मैं बोलूंगा अलग अलग डिवीजन जो है वो अपने आप में अलग अलग एसबीयू बन चुका है, और हर एसबीयू का अपना खुद का रिक्वायरमेंट रहेगा। दे मे हैव देयर ओन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दे मे हैव देयर ओन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और अ एसबीयू स्ट्रक्चर। कैन यू कम टू एसबीयू स्ट्रक्चर? आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने ट्राई कर रहा हूं। कम टू पेज नंबर 145. Can you see? Corporate level, I will say not just president, along with that you will have these corporate अलग अलग heads, ये normally corporate head office में बैठेंगे। Then you have SBU 1, 2, 3, 4, उनके अंदर भी अलग अलग डिविजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर किसी में। फॉर एग्जांपल ए में कोई डिवीजन नहीं है, सी में कोई डिवीजन नहीं है, पर बी में 3 डिवीजन और डी में 3 डिवीजन है, बिकॉज मे बी 3 प्रोडक्ट बन करके एक एसबीयू बन रहा होगा, क्योंकि उस इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मल्टीपल प्रोडक्ट मिलकर के पूरा सेक्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मे बी आईटीसी के लिए एफएमसीजी पार्ट अलग आ जाएगा, पेपर वाला पार्ट अलग आ जाएगा, सिगरेट वाला पार्ट, टोबैको प्रोडक्ट्स वाला पार्ट अलग आ जाएगा। तो बेसिकली अलग अलग एसबीयूज बन सकते हैं, एंड फिर इसके बाद में अलग अलग इन सब के अंदर रेस्पेक्टिव फंक्शंस आ सकते हैं। दैट्स हाउ डिवीजन कैन बी डन। बेटा मुग्धा, मैं आपको वही बोल रहा हूं, एसबीयू और मल्टी डिविजनल में एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली थियोरेटिकल तरीके से लिखा है, तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे बेटा। वो डिफरेंस क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्योंकि वो डिफरेंस क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने खुद तो आंसर देना चाहिए ना डिफरेंस का। तो एक काम करो, पढ़ के देखो उन्होंने क्या लिखा है। मल्टी डिविजनल ये, एसबीयू ये, डिफरेंस ये मत पूछो थियोरेटिकली। That's how they have written. Do you get my point? I'm telling you that multi-divisional ही evolve होकर के SBU बनता है, तो आप उसको differentiate नहीं कर सकते बेटा। It's not BCom, जबरदस्ती और भी में डिफरेंस पूछ ऐसा नहीं करेगा इसे, don't worry about it. ठीक है? अरे भाई समझा क्या? Come to the last part, जिसका मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, वापस एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा आपको। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये जो इसका, ये तो घटिया है एकदम। ऐसे ने इंक्लूड किया इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, थियोरेटिकली वैसा ही दिया बहुत सारी जगह पे, पर ये एकदम घटिया है। अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इनडायरेक्टली मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक अच्छा बड़ा जो ऑडिट फर्म है उसका एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक ऑडिट फर्म जब भी आप ज्वाइन करोगे फॉर आर्टिकलशिप, यू विल हैव पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, लेट्स से 3 साइनिंग पार्टनर्स है एक ऑडिट फर्म के अंदर, ठीक है। अब जब आपको हायरिंग होगा, तो आपका हायरिंग किसी एक पार्टनर के अंडर होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर मिस्टर ए, मिस्टर ए इज हायर्ड अंडर पार्टनर 1। अब पार्टनर 1 के अंडर में बेटा क्या होगा, यू हैव मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड मैनेजर जो ना वो रेस्पेक्टिव अलग अलग एंगेजमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा जो इमीडिएट सुपीरियर है वो मैनेजर 1 है, सो यू आर वर्किंग अंडर मैनेजर 1। तो टेक्निकली अगर आप मुझे पूछोगे, देयर इज अ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। वर्टिकल मतलब तुम ओवरऑल पार्टनर 1 के अंडर हो, बट पार्टनर 1 के अंडर भी मल्टीपल मैनेजर, सीनियर मैनेजर रहेंगे। उस मैनेजर में से मैनेजर 1 जो है, लेट्स से वो फॉक्सवैगन का ऑडिट करता है या टाटा मोटर्स का ऑडिट करता है, तुम टाटा मोटर्स का ऑडिट या फॉक्सवैगन ऑडिट करते हुए मैनेजर 1। अब इसमें ना पता क्या होता है, एक एक एंगेजमेंट के अंदर भी मल्टीपल मैनेजर होते हैं, ये और कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वेयर देयर कैन बी
a hierarchy where there is an authority flowing from two directions. So vertically also you are under someone and horizontally also you are under someone. So basically you have immediate superior and then you have a final superior. So for example, if you want to leave for your examination, first you have to apply to the manager जिसके साथ आप काम करने वाले हो अभी करंट पीरियड के अंदर या आने वाले टाइम के अंदर, फिर आपको आपके पार्टनर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल अप्रूवल खत्म होने वाला है. डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स हाउ योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वर्क्स. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब है आपके पास में टू साइड फ्लो ऑफ अथॉरिटी रहेगा, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल. ये आईटी कंपनीज वगैरह हो गए, सब में बहुत कॉमन है. ऑडिट फर्म्स, आईटी फर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स, अगेन वेरी वेरी कॉमन, जहां पर आप एक पार्टनर को असाइन करके हायर किए जाते हो, पर जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली उस पार्टनर के अंदर ही हमेशा काम करोगे. पार्टनर के अंदर भी अलग अलग मैनेजर रहने वाले हैं. मे बी यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस वर्किंग डायरेक्टली अंडर पार्टनर, बिकॉज पार्टनर में भी इतने हायर लेवल पर रहेगा कि अलग अलग मैनेजर के साथ भी आप डायरेक्टली काम करने वाले हो. बात समझ में आएगा? दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. एंड यहां पे एक चीज दिखाता हूं आपको मैं. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में देखो, इंपॉर्टेंट चीज को मार्क करना. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल डिजाइन्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोज ऑफ अथॉरिटी. सर नॉर्मली यहां पर सिर्फ वर्टिकल नहीं है, बोथ हॉरिजॉन्टल फ्लो है. तो कैन यू सी यहां पर हाई ओवरहेड्स हो जाएंगे, बिकॉज बोलने के लिए हाई ओवरहेड्स है, आपको मैनेजर भी अलग से हायर करना पड़ेगा, बट वो बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो काम ही कर पाएगा सक्सेसफुली अगर आपके पास में दोनों अथॉरिटी रहेगा, तो ही वो काम कर पाएगा, वरना काम नहीं कर पाएगा. अब जरा यहां पे आओ, देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बोलेगा, डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बाय डेविस एंड लॉरेंस हैव प्रपोज्ड 3 डिस्टिंक्ट फेजेस. इन्होंने जो फेजेस बताए थे, मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सिर्फ एक सिचुएशन के लिए, रियल लाइफ में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सही मायने में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है. इनके हिसाब से सडनली अज्यूम करो आपके पास में, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीए फर्म, दे हैव अ ऑडिट डिपार्टमेंट, दे हैव अ टैक्स डिपार्टमेंट. अज्यूम करो एडवाइजरी उनके पास में एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ रहे हो? एडवाइजरी एग्जिस्ट नहीं करता है. अब सडनली मैं बोलता हूं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं. अ फर्म XYZ, they have a settled audit department, tax department. settled department है, एक नया सेक्टर में वो एंटर करने का ट्राई कर रहा है, वो एडवाइजरी है. अज्यूम कर रहा हूं उनका वहां प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है. हो सकता है ऑडिट डिपार्टमेंट में आपके पास में 3 पार्टनर है, पार्टनर 1 2 3. टैक्स में 2 पार्टनर आपके पास. एडवाइजरी में कोई पार्टनर नहीं है, अभी शुरुआत नहीं है, बिकॉज दिस इज द न्यू इनिशियल स्टेजेस. तो आप क्या करोगे? मे बी एक पार्टनर जो ऑडिट वाला है एंड जो एक पार्टनर टैक्स वाला है, दे बिलीव दे कैन डिवोट सम टाइम टू एडवाइजरी, और साथ में काम करना शुरू करेंगे. अब हर पार्टनर के अंदर अलग अलग मैनेजर्स रहते हैं, तो टेम्परेरीली क्या होगा, इस पार्टनर के अंदर जो मैनेजर्स काम कर रहे थे, इनमें से मान लो मैनेजर 3 इजीली अवेलेबल है, उसको वो उधर लेके चले जाएंगे. तो टेम्परेरीली अगर आप मुझे पूछोगे, जब आप श्योर नहीं हो एडवाइजरी एक अलग डिपार्टमेंट बन के काम होगा कि नहीं होगा, कोई एक आध एंगेजमेंट है, आपने उसको पिक किया, एक पार्टनर का थोड़ा फोकस डाइवर्ट किया, एक मैनेजर का फोकस डाइवर्ट किया, इवन 1-2 आर्टिकल ले गए होंगे साथ में आप काम करने के लिए फॉर द टाइमिंग, वो एक आध एंगेजमेंट खत्म किया, फिर इससे धीरे धीरे आपको समझ में आया ये सक्सेसफुली काम कर रहा है. तो अभी तक आप जो HR हो गया, आर्टिकल हो गया, सब कुछ शेयरिंग कर रहे थे किसी एक एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट से. धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनना शुरू हो जाएगा. शायद हो सकता है ये पार्टनर यहां से एग्जिट करके पूरा एक नया पार्टनर बन जाएगा यहाँ पे along with this partner. Do you get my point? So these two may become new partners, और मे बी ये जो मैनेजर्स है वो नए पार्टनर बन जाएंगे और ये पार्टनर्स और हायर लेवल पे चले जाएंगे हिरार्की के अंदर. तो ये हिरार्की ना बहुत सब्जेक्टिव होते जाएगा. सो धीरे धीरे अगर आप मुझे पूछोगे, इस तरीके से इनके हिसाब से क्रॉस फंक्शनल हेल्प के थ्रू एक नया डिपार्टमेंट बनता है. देखो, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस मतलब अलग अलग फंक्शंस के टास्क फोर्सेस तो साथ में आके आपको हेल्प करना शुरू करेंगे. देखो, टेम्पररी बेसिस पे क्रॉस फंक्शनल फोर्सेस को इनिशियली यूज किया जाएगा नए प्रोडक्ट लाइन के लिए, जब उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है. प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट या ब्रांड एक अलग ब्रांड बनना शुरू होगा. देखो, अगर ये थोड़ा थोड़ा यूजफुल बनना शुरू होगा, परमानेंट बनना शुरू होगा, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट का हेड बनना शुरू हो जाएगा. इस अरेंजमेंट में धीरे धीरे चीजें स्ट्रक्चर में बनना शुरू करेगी. और लास्ट देखो, मेच्योर मैट्रिक्स. हो सकता है एक पॉइंट के बाद में वो मैनेजर ही एक पॉइंट का पार्टनर बन जाएगा, नए मैनेजर्स को हायर किया जाएगा और अब वापस से ड्यूअल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा. सो ड्यूअल स्ट्रक्चर डायरेक्टली नहीं होता है, पहले नया पार्टनर आएगा, फिर नए मैनेजर्स आएंगे, तब जाके ड्यूअल स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा. जब एक नया शुरुआत होगा, तब हमेशा नए डिपार्टमेंट या नए प्रोडक्ट के लिए एक आध बंदा वर्टिकल हायरार्की रहने वाला है, बट वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल होने के लिए इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल. दैट्स हाउ दे आर सेइंग देयर आर 3 फेजेस. टेम्परेरी लोग जाएंगे, धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होगा, परमानेंट नेचर होगा, और फिर
प्योर तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा, तब जाके हमारे पास हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल हायरार्की बनेगी। ये रियल लाइफ में इस तरीके से काम करता है, मैं आपको समझाने का वो ट्राई कर रहा हूं, बात समझ में आएगा आपको। अनफॉर्चुनेटली ये चीज एग्जाम में आ सकती है, ये तीनों फेजेस कैसे हैं देखो। However, matrix structure is not very popular because of difficulties in implementation. I'm saying sorry. They have not understood that this has become very common now, according to me. Do you get it? Exam point of view, I would say, since recently they've asked a question on hourglass structure. Let me show you also. I think in May 19 only they asked this question. See, question number 10. What is an hourglass structure? How it is beneficial for an organization? Got it? November 19. Let me show you what they asked. Distinguish between transformational and transactional leadership style. आंसर देखो, इतना सा है बस। वही जो चीजें मैंने पॉइंट्स में लिखी है, उन्होंने अलग अलग 3 पॉइंट्स बना दिए। अंडर कंटेंट पढ़ के देखो, सब सेम रहने वाला है। समझा गया? ओके, जस्ट गिव मी 1 minute. Do you have any doubts, guys? Nope. Okay. So there is one question which I told you we'll discuss in the end, and let me share that question with you. So Mr. Rohan has asked me this question. Don't you think that this kind of limelight, so when we were talking about leadership qualities, I did tell you that sometimes normally few faces become famous, or they get the limelight rather than the other people. Do you get my point? In the organization. So don't you think that this kind of limelight to individual may create jealousy among rest of the people and ultimately affect the business? This is a human nature, guys. 100% ऐसा हो सकता है, कोई डाउट वाला बात ही नहीं है उसके अंदर. But I'll tell you what, as business become matured, according to me, even people working under that businesses, they start becoming matured. They start realizing what their importance is. Now this is where the role of leader comes into picture. I will tell you what, a leader will successfully continue to hold that position if that leader knows how to recognize the efforts of other people as well. And if you have that kind of quality, according to me, that is how the organization goes to a different level altogether. So according to me, हर किसी का equal importance होता है. Jealousy factor 100% आ सकता है, because ये human nature है, that cannot be avoided. That can happen with anyone in this world. Do you get my point? But that's how the thing is. And rather, I'll tell you personally, you should get to experience both sides. Like, you should become the face sometimes once in a while, and in certain scenarios you should be someone who's sitting on the back seat and seeing how things are looking from that side also. If you get to experience both, which is possible, I'll tell you. I don't know personally, but when we were starting new businesses, I think the Class Baba, what we were starting, I was one of the faces along with one more person. Do you get my point? But when we started Tigo, that is the online kabaddi store, I was not the face at all. Rather, the two other partners, they were the face. I was just sitting at the back, the one who was contributing finance or maybe giving some guiding steps that how can we navigate this business. So when you experience both, maybe at a younger age, you start realizing the importance of both. And this is part and parcel of life. This is going to happen in every organization. This is going to happen in every business. It's all about leader, how that person or along with other people, how they handle the situation, according to me. And
it also shows sometimes how matured you are also, who is not experiencing the limelight. That person's maturity plays a equally important role, because they need to understand that bottom line is people will get to know who is doing what. May not be today, may not be after 5 years, but once the crowd also becomes matured, they will definitely understand this. And you should cater to matured crowd only. Amateur crowd doesn't do good. For example, Rasoda song can become very famous, but you cannot compare that with any of the Lucky Ali songs or Arijit songs. That is something which cannot be comparable. I hope you understand the difference. Amateur and mature, there is going to be a differentiating part, and I'm sure you will be able to differentiate that when it comes to future. Do you have any other doubts, guys? नो रसोड़ा सॉन्ग यार. गो होम आराम से. गो होम मतलब घर पे बैठे हो तुम, चालू करना यूट्यूब पे, सुन लेने का एकदम. अब आई लाइक द मेलोडी, लाइक द वे द सिंग इज, इट्स गुड, आई लाइक इट. डोंट वरी, घर बैठ के सुनो आराम से. मैं क्या गाएगा, मेरे को आता भी नहीं गाना गाना यार. आई डोंट हैव एनी सॉन्ग गाइस. रसोड़े में कौन था, आई डोंट नो. वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. चलो ठीक है. ओके ओके ओके. अब नाउ वी आर डूइंग लॉट ऑफ टाइम पास. इट्स 10 o'clock already. You should sleep on time. No, 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 no. ठीक है, ठीक है. शिनचैन, शिनचैन, प्यारा शिनचैन. आई डोंट नो शिनचैन सॉन्ग एंड ऑल डूड. मेरे को शिनचैन विंचैन का सॉन्ग नहीं आते. माई टाइम, आई डोंट नो. इंटरेस्टिंग आर्टिकलशिप इंसिडेंट. Portion for tomorrow's test. I have to create also test for you. Tomorrow morning only I'll create it. Don't worry. We'll cover chapter number 1 to 7. All 1 to 7 is done. So we'll cover all 7 chapters. पढ़ो आराम से बैठ के, दिन में कोई दिक्कत नहीं है. But I'll focus more on chapter 1 to 6. Don't worry. 1 to 6 पे ज़्यादा फोकस रहेगा. 7th पे एक आध क्वेश्चन. Don't worry. ठीक है. Yes, I'll send the test. Don't worry. ठीक है. चलो गाइस, थैंक यू. विल कनेक्ट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट.